Jai Swaminarayan. Sri Swaminarayan International School wishes you a happy Independence Day. Independence Day isn't just a date on the calendar, but it is the courage of millions who fought for it so that we could have a free nation. Freedom was gifted to us by the heroes from the past, but now giving it a true meaning is our responsibility. Real freedom means having the determination to speak against injustice, having the courage to have fight against injustice, and the patriotism towards our country. At last, I would like to say, one nation, one pride and one flag. अगर कोई पूछे कि तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान क्या है तो गर्व से कहना, मैं भारतीय हूँ। यह तिरंगा सिर्फ 3 रंगों का कपड़ा नहीं, यह लाखों सपनों, करोड़ों बलिदानों और हमारे भारत का स्वाभिमान है। आज इस स्वतंत्रता दिवस पर हम केवल आज़ादी का उत्सव नहीं मना रहे, बल्कि उन वीरों को नमन कर रहे हैं जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण भारत माता के चरणों में अर्पित कर दिए। तो आइए मिलकर संकल्प लें कि अपने कर्म, अपने संस्कार और अपनी मेहनत से भारत को विश्व का सबसे शक्तिशाली और महान राष्ट्र बनाएंगे। क्या आप जानते हैं कि हम खुले हवा में सांस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारे वीर शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आज़ादी का एक अमूल्य उपहार दिया। आज हमारा एक ही धर्म है, भारत प्रथम है और एक ही पहचान है, हम भारतीय हैं। तो आइए हम संकल्प लेते हैं कि हम हमारे देश का नाम शिक्षा, संस्कार, मेहनत और ईमानदारी से पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। આ સ્વાતંત્ર્ય દિન નિમિત્તે હું આપ સૌને એક પ્રશ્ન પૂછવા માંગુ છું કે જો આપણો દેશ આઝાદ ન હોત તો આપણે આપણી મનગમતી વાણી બોલી શકતા કે આપણા વિચારો મુજબ જીવન જીવી શકતા? આ બધા જ પ્રશ્નોનો જવાબ છે ના। મતલબ કે 15મી ઓગસ્ટ માત્ર એક તારીખ નહીં પરંતુ આપણા સ્વાતંત્ર્યતા અને સ્વાભિમાનનું પ્રતીક છે। તેથી જ આજે આપણે 80મો સ્વાતંત્ર્ય દિન ઉજવવા જઈ રહ્યા છીએ। તો આપ સૌને સ્વાતંત્ર્ય દિન નિમિત્તે મારી ખૂબ ખૂબ હાર્દિક શુભેચ્છાઓ।